क्योंकि प्रोड्यूसर्स को अभी समझ नहीं आ रहा है कि इवन एक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा है कि ऑडियंसेस को क्या पसंद आना है। तो गोइंग फॉरवर्ड, डू यू थिंक कम फिल्में बनेंगी? अभी के ट्रेंड पे यस, तो प्रोड्यूसर्स आर टॉकिंग, ट्राइंग टू ब्रिंग कॉस्ट डाउन, ट्राइंग टू इंश्योर दैट द टॉप जो एक्सपेंसेस हैं वो अगर स्टार की रुपीज नंबर वन टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव होती है तो उसको अगर हम बॉक्स ऑफिस लिंक कर दें। Girish Johar, welcome to CNN News 18. या हाय विशाल, हाउ आर यू? गुड टू बी Very बैक। good. How are you, sir? Long ऑल time. गुड, ऑल गुड, ऑल गुड विशाल। Girish, sir, we are witnessing a trend of old films re-releasing. Last week it was Gangs of Wasseypur and Rehna Hai Tere Dil Mein. Few weeks ago it was Laila Majnu, and these films are having a field day at the box office. But how do you see this trend of film re-releasing in theaters? So obviously it's a culmination of couple of factors जिसकी वजह से ये सब री रिलीज हो रही हैं. The primary factor is the cinema exhibitors or the multiplex screens have ample of space in the sense that there are no other major releases happening in Hindi or English. तो उनके पास एक तो स्पेस इशू मतलब अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है. And couple of releases have been postponed. Most of the films are not doing well. खाली एक या दो ही फिल्में अच्छी जा रही हैं उनके बॉक्स ऑफिस पे. तो एंड आगे आने वाली पिक्चरें हैं बॉक्स ऑफिस, अब क्या कहते हैं, दिवाली पे आएगी. तो तब तक थोड़ा सा एक अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है उनके पास. So I think that's the key factor which is, ensuring. And the second factor is that nostalgia is at the end right now. Films are being re-released. These are old films which have done well earlier, and they are relatable. They are already connected with the audiences, and the cinema people want films which have been successful in their own ways, so that they can offer them fresh perspective. मतलब they can watch them freshly in a cinema क्योंकि बहुत पुराना टाइम हो चुका है तो they can enjoy the film again on screens. Sir, Bollywood studios generally lock their slate and their schedule much in advance. Why is Bollywood in crisis right now? Why new films are not releasing? We have never witnessed, not for a long time, we have not witnessed such a kind of scenario where, there are films, there are only old films which are being re-released. Need to see, I think the entire scenario has changed post, to be very honest, the pandemic. तब से जो हमारा हेयर वायर हुआ है शेड्यूलिंग ऑफ फिल्म्स, वो पैटर्न्स चेंज हो गया है. बहुत सी पिक्चरें डायरेक्ट ओटीटी पे चली गई, कुछ पिक्चरें शेल्व हो गई, कुछ पिक्चरें सिनेमाज पे आई जिनमें से थोड़ी बहुत चली और बाकी सब नहीं चली. तो पोस्ट द पैंडेमिक द कंजम्पशन ऑफ थिएट्रिकल ऑडियंसेस काफी चेंज हुआ है. उनका जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स है वो चेंज हुआ है. तो अब उसकी वजह से एक जो बैलेंस है जो, और इन अदर वर्ड्स एक इक्विलिब्रियम है, वो अभी तक सेट नहीं हो पाया है. बहुत से एक्टर्स की फिल्म है वो लोग रीवर्क कर रहे हैं सो दैट दे डोंट फील दैट दे आर आउट ऑफ सिंक इन ऑडियंसेस प्रेफरेंसेस माइंड. तो एडिटिंग पे पोस्ट प्रोडक्शन में जो कुछ फिल्में रेडी हैं वो लोग फिर से काम कर रहे हैं. तो आई थिंक बेसिक जो आपको एक बेसिक ऑडियंस के जानने के लिए उसकी वजह से ये थोड़ा जो इक्विलिब्रियम मीट नहीं हुआ है, ये गैप उसकी वजह से. Sir, you yourself is a film producer. Uh, क्या? Is there a sense of fear that has gripped the filmmakers right now? And do you think because that lack of confidence in the content, which perhaps is stopping these filmmakers to release new films? यस आई थिंक सो. फियर तो डेफिनेटली है सी, बिकॉज सी ड्यूरिंग पैंडेमिक में क्या हुआ था, ओटीटी के राइट्स सब्सटैंशियली रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे प्रोड्यूसर्स को. अब ओटीटी की अगर आप लेटेस्ट स्टडीज करें तो ओटीटी की जो मार्केट है एटलीस्ट इन मेट्रो सिटीज थोड़ी सी स्टैग्नेंट की तरफ हो गई है. टू ग्रो देयर रेवेन्यू दे हैव टू गो टू टायर 2 टू टायर 3. तो कमिंग बैक थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स का जो एक अप्रोप्रिएटेड रेवेन्यू था कि ओटीटी से आएगा सैटेलाइट से आएगा, वो थोड़ा सा कर्टेल हुआ है. दैट्स वन रीजन. एंड डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस का क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है कि नॉर्मली प्रोड्यूसर सोचते हैं कि ठीक है इतना 40-50% अगर हम दूसरे राइट से कमा लेंगे तो 50% हम थिएट्रिकल से कमा लेंगे. बट अब सारे ही में इतनी
ऑडियंसेस की जो प्रेफरेंस है वो इतनी शार्प शार्प हो गई है कि दे आर नो लॉन्गर गोइंग मिडवे, सो एवरेज और बिलो एवरेज प्रोडक्ट is no longer finding hold at the box office. तो इसकी Sir, वजह से I don't know. Sure, sure. But, then what you say about these moderate hits like Crew, which worked very well in the ticket window. yeah, And then there was some big hits like Article 370, there was Shaitan, there was Munjia, there's 3-2. What is it that these films are offering that is making people go and watch these movies over others, or rather skipping others? कि ये जो आप रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं विशाल, इसका रिफ्लेक्शन का पर्सपेक्टिव ये है कि ये अभी बनी नहीं है, ये फिल्में पुरानी बनी हुई थी जो कि ओटीटी की वजह से आगे पीछे हुई, रिलीज डेट हुआ, और ये फिल्म फिर पोस्ट पैंडेमिक जब रिलीज हुआ तो ऑडियंसेस को कुछ पसंद आई, कुछ मीडियोकर लगी, कुछ बहुत अच्छी लगी। जो मैं आपको बात समझाने की बात कर रहा हूँ वो है आगे के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को अभी समझ नहीं आ रहा है कि इवन एक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा है कि ऑडियंसेस को क्या पसंद आना है, a year ahead. And that is the reason I think there is a fear, because they feel कि जिस कॉस्ट के अंदर उन्होंने एक फिल्म को ग्रीन लाइट किया था या प्रोड्यूस किया था, वीजा वी जो भी रेवेन्यू मोनेटाइजेशन पोटेंशियल है उसके बीच में गैप ज्यादा आ रहा है। तो दे आर फियरिंग कि इट्स अ ह्यूज, इट्स बिकमिंग अ bigger risk to release films right now. When is the right time? They probably need holidays, they need a proper windowing, or they need proper marketing, or they need pre-sales of their satellite or digital buys. So it's a conflicting situation, काफी confusing state of mind चल। So going forward, do you think कम फिल्में बनेंगी for theatrical? अभी के ट्रेंड पे यस, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, जो कि इफेक्ट थोड़ा बहुत आगे भी दिखेगा हम लोगों को आने वाले टाइम में। बहुत से एक्टर्स, बहुत से मेकर्स, बहुत से डायरेक्टर्स आर रीथिंकिंग व्हाट विल बी गोइंग ऑन फ्लोर्स, व्हाट बजट्स, व्हाट नंबर्स। तो यस, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि शॉर्टफॉल ये रहेगा आगे। तो देन It can be covered by other films. मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। It can be covered by southern films, जैसे इस साल काफी southern films की आई। It can be covered by Hollywood films. It can be covered by one or two Hindi films. But by and large जो हम लोग पहले सोचते थे कि free flow of films है, वो comparatively slow down हुआ है। Yes. तो सर देन what is the future of theatrical business now at this point in India? It was At this booming point, in 2019. 20 vis-a-vis 2019. So Yes. yes, we vis-a-vis 2019 was one of the landmarks here for the theatrical business, and yes, with respect to that, I think we are falling short at least by 20%. I don't have the exact numbers because the numbers are still coming in, and we have been seeing hits. Last year we saw Animal, Gadar. This time we have Shaitan, we have Stree, which is doing extraordinarily well. So we have those one or two big releases, but I think by and large, अगर हम annual basis देखा जाए तो we are around 20% short, and we have a couple of months more to go. We may have few more surprises like Shaitan or Crew. We really hope that, and मतलब वो gap जितने जितना कम हो उतना अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए। It looks like Amar Kaushik saved the theatrical business this year. For sure, I will not. I will. There are no two ways on that, and I will fully second that. Theaters were seeing a lot of bad times, and the good part is that tier two, tier three, and tier four, they are running these films. और अभी जो गैप आ रहा है उससे स्त्री को डेफिनेटली और बेनिफिट मिल रहा है, और ऑडियंसेस को भी अच्छा लग रहा है, एंड सिनेमा एग्जीबिशन एंड फ्रेटर्निटी को भी काफी फर्क पड़ा है स्त्री की वजह से, अमर की वजह से। यस। So we are in September. There's still 4 more months to go. Yeah. Which are the films you are most excited about and you hope that they'll do good business? See, in terms of good business, definitely the commercial films जो कि हैं, सबसे पहले तो हमको भूल भुलैया 3 का बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ जॉनर, एंड जो आजकल चल रहा है फैमिली कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, एंड उसके बाद सिंघम अगेन अगेन इज ऑल्सो देयर, एंड वेलकम टू द जंगल जो कि अक्षय की एक है, अभी वो स्लॉटेड है एज ऑफ ऑन क्रिसमस, बट वो आ रही है नहीं आ रही है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। And then we have Sitare Zameen Par of Amir Khan. That's also there. Baby John of
दिस Vrindavan. वरुण धवन इनकी है. सो पिक्चरें तो है लाइनअप, और भी इमरजेंसी का भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है. अब अर्बन ऑडियंसेस के लिए होगी, बट मास ऑडियंसेस के लिए काफी बड़ी पिक्चरें हैं. इंग्लिश फिल्म्स हैं बाय एंड लार्ज, वो भी इफ दे कैन डू क्वाइट वेल. जोकर 2 इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट. बट यस, फॉर हिंदी सिनेमा ये चार पांच पिक्चरें तो हमें लग रही हैं कि इफ दे कैन कम एंड डू वंडर्स, सम साइड मिलेगा, सम ब्रीदर मिलेगा सब. A few months ago, there was a lot of talk around high star fees and entourage costs. Is there a new formula that has been worked out to make films a viable business? I think there have been constant talks with the actors and with all the key stakeholders to bring the budgets down, because the revenues have shrunk majorly. Box office has shrunk. Box office की जो pattern है वो, I say it's a K-shaped recovery. Box office अगर पिक्चर चलती है तो बहुत अच्छी चलती है, अपवर्ड स्विंग हो जाता है. और जो पिक्चर नहीं चलती है उसका एकदम डाउनवर्ड स्पाइरल होता है. पहले हम लोग सोचते थे कि अगर पिक्चर एवरेज भी होगी तो 3 दिन चल जाएगी, फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड चल जाएगी, मंडे को फॉल आ जाएगा. अब आजकल वो नहीं होता है. आजकल फ्राइडे को ही अगर फिल्म अच्छी ना हो तो फ्राइडे को ही द फिल्म इज डिक्लेयर्ड डेड, and there are no chances for Saturday and Sunday. So we are witnessing, I believe, a K-shaped kind of in theatrical. So मेरे को ये लगता है कि going ahead, theatrical will remain the key thing, because अगर सैटेलाइट एंड ओटीटी की भी जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, बिजनेस टर्म्स के आ रहे हैं, वो लोग भी यही बॉक्स ऑफिस लिंक ही चाहते हैं. उनको भी दिखता है कि बॉक्स ऑफिस से एक अवेयरनेस लेवल होता है. सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर फोकस होगा तो द इंटायर मशीनरी वुड वर्क इन अ बेटर वे, एंड दैट्स द राइट थिंग ऑल्सो. So producers are talking, trying to bring costs down, trying to ensure that the top जो expenses हैं वो अगर स्टार की रुपीज नंबर वन टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव होती है तो उसको अगर हम बॉक्स ऑफिस लिंक कर दें किसी भी तरह, या ओवरऑल रेवेन्यू के साथ परसेंटेज लिंक कर दें. So these things are being worked out. The good part is that everyone is talking, so everyone understands, everyone realizes it. So there is a feeling that that sooner we'll come out of this very short. Are you saying that when the film works well at the box office, it also performs good on the OTT? Is that what you're saying, sir? So yes, by and large तो yes it happens, क्योंकि उसकी अवेयरनेस लेवल्स बहुत होती है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत होती है. तो ओटीटी के लिए जो फिल्म को जब वो प्रेजेंट करते हैं या सैटेलाइट पे जब प्रेजेंट करते हैं तो बाय एंड लार्ज होता है. एग्जैक्ट सैटेलाइट हिट शुड बी अ बॉक्स ऑफिस हिट, और एन बॉक्स ऑफिस हिट इज एन ओटीटी हिट. दैट इज मूवी टू मूवी डिपेंड. Well, thank you so much. But how excited are you about Singham Again that is coming on Diwali? I'm very excited. I'm really looking forward to the film, and from the industry perspective, it's one of the biggest films, and we really hope that it takes a flying start, and everyone is keenly awaited for the film. Yes. Thank you so much for your time, sir, and all the best. Thank you so much, Vishal. As always, pleasure talking. Thank you. Same, sir.